हेलो हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड डाउन ट्रेंड चालू ही है। कल के पुट्स है तो जस्ट होल्डिंग एट टुडे, डिड नथिंग, नो ट्रेड्स। एंड सॉरी, आधा स्क्रीन कैमरा को दे दिया, ऑलमोस्ट आधा। बट या नो ऑप्शन इन टैबलेट और इफ आई एम रिकॉर्डिंग इन माय लैपटॉप तो वो साउंड नहीं आ रहा किसी एंड्रॉयड डिवाइसेस में। एंड दिस क्वालिटी इज कमिंग गुड इन दिस वन, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन। एंड लेट्स सी, अगर ये कैमरा वाला अच्छे से वर्क करे तो कुछ करते इसका। Regardless, puts are on good profit, I guess. पूरा consolidation का जो losses था is now recovered with the open profits. देखते हैं कितना book होगा इसमें। And that's it. The levels today I was waiting कि 24,500 break हो जाए, तो उसके ऊपर I would have exited my puts and entered calls some quantity. But now that that didn't happen, तो दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल आई एम लुकिंग फॉर इन द मॉर्निंग। कि जो लास्ट लास्ट तो नहीं है ये, आज का हायर, सॉरी लोअर हाई, तो वो कंसिडर करेंगे अराउंड 24,300 325 ये वाला। एंड अगर इफ़ देर इज़ अ गैप अप हियर टुमारो एंड इट सस्टेन्स फॉर अ वाइल एंड जस्ट गोज गैप, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, कंटिन्यू रहे फिर से, नॉट एन इश्यू, कीप होल्डिंग द पुट्स। But agar if it is opening above this, so we are going long in an hour or something, like at least within half an hour I would go long. But अगर इसके नीचे टिका हुआ है and then it goes sideways here, then I would wait कि sideways के बाद भी I would go long. But अगर इसके नीचे फिर आ गया है, अगर back to these levels of below this last lower high, 270 250 ish around जो आ जाएगा अगर वो, then I wouldn't be exiting. That's it. That's the plan for today. I mean tomorrow. And let's see the comments. भाई इतना होल्ड करने वाला और कौन कौन ट्रेड है उनको जानते हो क्या? आई डोंट नो मैन, आई थिंक माई फ्रेंड्स डू दैट। हिमांशु ओझा डज इट, यू कैन फाइंड हिम ऑन एक्स। बाकी तो सेंसिबल पे शोकेस पे देखे जाएंगे, ऐसे ट्रेंडिंग डेज पे यू विल सी them on the top list. Hi Chirag, a small carry when market goes into a broader trend in your favor, like when your 300 to 500 ITM becomes far ITM, do you switch your strikes, lower move to lower delta, or you ride the same strikes? Yeah, I ride the same strikes. यही होल्ड रहेगा, डायरेक्ट अभी कॉल्स ही लूंगा। द नेक्स्ट ट्रेड विल बी टू एग्जिट दिस एंड बाय कॉल्स, देन लेट इट गो वेर एवर इट गोज। अगर ज़्यादा बड़ा मूव आ गया और ये इलिक्विड हो जाता है तो आई विल बी एग्जिटिंग विथ लिमिट ऑर्डर, so that would take time, but I think that would be sufficient. Hi Chirag sir, do you feel nowadays by seeing the nifty charts that in this market we can, sorry, this market we can only scalp, we can't hold too long any position, as these days when I try to scalp I make profits, when I hold at last I have to cut my trade at cost to cost or some loss. In Twitter also very mixed views. I mean Twitter views and the strategy you are following should not be coming close to each other, I guess. Uh, the current phase that you saw in consolidation, yes, of course, your strategy is scalping, booking profits with small points. It is all will work. It will always look good in that way. But the broader market, if you are looking to get big trends, you have to hold. Even in consolidation, you have to face losses, but then wait for the next trend to come, which could give you good profits. So that's how it is. It depends on the strategies. Any strategy will work if followed with discipline and the selected set of rules. If it is followed well, I think it should work. And current market scenario, yes, if you are talking about December, yeah, small profits would have been good, but we don't know when it will trend. We don't know if this is a downtrend going on since 2 days. It will last or not. It will give money or not. We don't know. Tomorrow it could be a gap up. So we can't say which strategy is the best. It depends on the back test. It depends on how it works in the normal market scenario. That's it. That's it for the day. Thank you. See you later tomorrow. And love you guys.